Hello, good afternoon to all of you, and thank you for joining in live for yet another webinar from Kotak Securities in the series Wednesdays. Hello, I am Ritesh Kumar Sahu from Kotak Securities Commodity Research Team. The topic for today's webinar is Understanding Agri-Commodities Futures in India. So, in this webinar, हम लोग commodity agri commodity as an agri commodity as an asset class discuss करेंगे where we can where asset perspective of participating in futures trading and discuss some essentials and that one should know before trading in agricultural commodities. We will also discuss about the kind of participants who trade in agricultural commodities and their strategies, how they enter into the commodity for the hedging purpose or for the profit purpose. And one can so that one the new participants who want to trade in agri commodities can have the informed decision before participating in the agricultural commodities. So most of us are familiar with the trading in shares, bullions, energies, and currencies. So this presentation will be entirely on the agri commodity assets, and so it is a very important asset where as the product is fully dependent upon the seasonality, its weather, then perishability is there, so location specific, and but it is consumed all over the world, and the quality issues are also a very prominent aspect in determining the price. So in agri commodities also we see a lot of volatility, and there are opportunities to trade and make money. So we are now going into the presentation. Can I have a presentation, please? So our agenda for this presentation will be we'll see first what is the spot market in commodities, agri commodities, and how it is different from futures market. Then we see how the agri futures look like, how what is the contract specification, what things you should be focusing on. उसके बाद हम लोग कुछ फ्यूचर्स मार्केट के एसेंशियल्स मींस सम ऑफ द की वर्ड्स जो पार्टिसिपेंट्स को जानना जरूरी है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी जरूरी है. उसके बाद हम लोग जो कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस जैसे एनसीडीएक्स और एमसीएक्स पे ट्रेड होती है वो अवेलेबल कौन कौन सी कमोडिटीज आर अवेलेबल. और उसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है या प्राइस का डिफरेंसेस एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने से होता है, तो वो कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड होती है. सो उसके लिए हम लोग सप्लाई डिमांड बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और अंत में हम लोग करेंगे कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से पार्टिसिपेंट जो एग्री कमोडिटीज के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे हेजर्स हो गए, आर्बिट्राजर हो गए और रिटेलर्स हो गए, और वो कौन से स्ट्रेटजीज पे, जैसे हेजर हो गए वो कैश एंड कैरी प्रेफर करते हैं, और जो आर्बिट्राजर है स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं, और रिटेलर्स मोस्टली प्रेफर डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेडिंग. सो पहला जो है स्पॉट वर्सेस फ्यूचर. सो इसमें हम लोग एग्री कमोडिटीज मार्केट में दो चीज़ें बहुत दो टाइप के मार्केट्स हैं. फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज फ्यूचर्स. तो फिजिकल मार्केट में हम लोग के पास अभी दो जगह है जहाँ जो कि एपीएमसी मंडीज है एंड देन ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. सो एपीएमसी मंडीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहती है और वो हर एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल्स पे अवेलेबल है, और वो कुछ इस तरह से दिखती है. जो क्वालिटी चेक वहाँ पर जो कमोडिटी ट्रेड होते हैं वो क्वालिटी चेक होता है, और उसके पास उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज. और ये जो होता है वो ऑक्शन बेसिस पे होता है, जो लाउडली बोल के किया जाता है,
और उसके बाद जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो कमोडिटीज दे दी जाती है। उसके बाद उसका वेइंग होता है और लोडिंग करने के बाद ये अपनी डेस्टिनेशन वेयर हाउसेस में ये पहुंच जाता है। Then another is इनाम। इनाम इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो वो एपीएमसीज में ही गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, जिससे फार्मर्स एंड अदर ब्रोकर्स और हो गया या फिर कोई बड़ी कंपनी हो गई जो प्रोसेसिंग में है, वेयर हाउसिंग में है, दे ऑल रजिस्टर इन इनाम प्लेटफॉर्म एंड देन द इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इज गोइंग ऑन एंड देन जो मैच होता है तो उनको वो प्रोडक्ट डिलीवर की कर दी जाती है। एपीएमसी मंडीज और इनमें जो मेन डिफरेंस होता है, एपीएमसी मंडीज में वो लोग लोकल बायर्स एंड सेलर्स को ज़्यादा प्रिफर होता है, जबकि इनाम में इंटर स्टेट ट्रेड भी वेरी इजीली कर सकते हैं। एंड सेकंड हुआ फ्यूचर्स मार्केट। इसमें एनसीडीएक्स और एमसीएक्स दो है, तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दीज एक्सचेंजेस इन द लेटेस्ट स्लाइड। तो अगर फ्यूचर मार्केट देखते हैं एनसीडीएक्स में, तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो ये स्पॉट मार्केट से दिखता है, और फ्यूचर मार्केट हम लोग ऑफिस में बैठ के भी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, ऑफिस में, घर पे और कहीं पर भी। सो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वेयर यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स एंड यू कैन ट्रेड। तो एग्री फ्यूचर मार्केट का और डिटेल्स में हम लोग करेंगे, तो इसमें एग्री फ्यूचर्स इज द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफिकेशंस है वो सब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इफ यू डोंट नो दोज स्पेसिफिकेशंस देन इट इज वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। सो पहला होगा सिंबल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल है। देन एक्सपायरी डेट होती है इन फ्यूचर्स मार्केट, देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्ट हैज ए expiry date, fixed expiry date. NCDX में for example if we say March expiry date, then it is a 20th March. So NCDX पे हर एग्री कमोडिटी जो एक्सपायर होती है वो 20th को होती है। जैसे प्राइस कोटेशन हुआ, कौन सा डिलीवरी सेंटर है, देन व्हाट इज द ट्रेडिंग आवर्स नाउ इट इज 10 AM to 5 PM का मंडे टू फ्राइडे तक इसका होता है। ट्रेडिंग यूनिट उसमें मेंशन किया जाता है। देन टिक साइज होता है कि उसका जो पर मूवमेंट कितना रहेगा, 2 रुपये है, 5 रुपीज है, 1 रुपीज है। देन टिक साइज एंड डिलीवरी यूनिट उसका फिक्स रहता है। सो इन इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, बट इन द स्पॉट मार्केट नथिंग इज फिक्स्ड, इट इज बेस्ड ऑन the commodity or what is available in the market. But in the futures market, the contract will be fixed, everything is prefixed, and they have to just quote their prices and trade. So why futures in agriculture? So there are two main reasons. First is transfer of risk and the second is the price discovery. तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे होता है? जैसे अगर बायर है, बायर को भी रिस्क है, एंड इफ इट इज अ सेलर देन उसको भी रिस्क है। अब बायर को क्या रिस्क है? बायर को ये रिस्क है कि अगर मैं अभी नहीं खरीदूंगा और देन प्राइस विल गो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मुझे ज़्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। और सेलर को जो रिस्क होता है वो होता है कि प्राइस कम ना हो जाए। सो इन फ्यूचर मार्केट वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे दोनों ही अपना रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। अगर बायर है, उसको लगता है कि प्राइसेस ना बढ़ जाए, उसके लिए वो आज के ही दिन बाय कर सकता है। इफ द प्राइसेस आर अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क इट इज लो, सो आज ही बाय कर सकता है। एंड देन सेलर भी उसी के हिसाब से वो अपना प्राइस पहले ही लॉक कर सकता है। अगर अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है, देन ही कैन lock in the price in the off season also, because we have contract because the exchange the facility देता है कि आज ही उसको लॉक किया जाए, और प्लस द डिलीवरी होता है वो जो फ्यूचर डेट में होता है। एंड द पार्टिसिपेंट्स अगर है, ये 3 टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं, हेजर्स, आर्बिट्रेजर्स एंड रिटेलर्स। I will discuss more about this in
नेक्स्ट स्लाइड्स। अगर हम देखें कि एग्री कमोडिटीज इंडिया में इंडियन एक्सचेंजेस में कितने हैं, तो इफ यू सी ऑल द see in the list, all the commodities which are listed are we see India is the top in all the commodities in the production, export में देखो या production में देखो या फिर consumption में देखो. So we are top in all the commodities except the crude sunflower oil. So if you see jeera, turmeric, coriander, it is all India based products, and we produce almost 75 to 80% of its production. We as a country we export, the exports are high, and they are all seasonal commodities, and there are lot of fluctuation in prices we see in all the commodities listed in this slide. So we see in this contract specification we see all the commodities. So jeera, if you trade in NCDX, it is the trading unit is 3 metric tons, and the price quotation is in quintals. It is 100 kgs. Then tick size, one minimum tick size is 5 rupees. So if you quote 27,500, then next is 27,505. So like that it is. Then the delivery center is Unja. Why Unja? Because it is the main production hub, and that's why Unja in Gujarat is the delivery center for NCDX jeera. So per rupee movement जो होता है वो we see to 30 rupees. If there is a 100 rupees movement, then we can get around 3,000 rupees profit or loss, and it is all deliverable contract. So in NCDX, all the commodities which are trading, they are all deliverable contracts, and delivery happens at the end of the contract expiry, that is on 20th of the contract expiry month. So only one commodity, crude sunflower oil, it is cash settled, and it is recently launched contract. Then so in other commodities there are turmeric, dhania, then guar seed, guar gum, castor is all are industrial products, heavily heavy demand, and we see a lot of like price fluctuation because of demand supply gap, production gap, and other export export demand, and other thus. Then future market essentials. If you want to trade in futures, then some of the key points or key terms we have to be taken care of. उसमें पहला है कि फ्यूचर मार्केट में अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो एक लिवरेज प्रोडक्ट है, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग द फुल amount of the contract value, but in the spot market we have to pay the full amount and then take the delivery. But in leverage, in this leverage product in future market, we are not paying full amount, and only the margin is required to enter into the contract. So it is both good and bad for the investors. If leverage product, if they are in profit, they get a very good ROI, but when they are in loss, then it can wipe out all the margin money they have in their account. So what is the meaning of leverage? I will explain in the next slide. The leverage means this. If this is just a example. So here it is castor seed, where if we see the price is 5,740 per quintal, and the value the trading unit is around 5 metric ton, that is 50 quintal. So the value of this whole contract is around 2,87,000. But for entering the contract in buy or sell, you required only the margin money, that is 11%, that is 31,570. You have to pay that much money, and then you can get the whole amount, whole of this trade, whole of this lot. So in similarly in cotton seed oil cake, the price is
the contract amount will be 2 lakh 48,000, but you have to only pay 32,000. In Jira, it is around 8 lakhs value, and you have to. There is a requirement of only 1.83 lakh rupees. So like that, then margin money in all other commodities is listed here. So it is for the information. It may change. Exchange has the rights to change these margin requirements depending upon the volatility. So this turmeric Jira, these were also 13 and 12 earlier, but due to their a lot of fluctuation in prices, exchanges increase their margin requirement by 10% and more. Then other second is the cost of carry, where it is a very good concept, where because of this the future value of a commodity is derived. So if the spot price is of castor is around 57.40 now, and then the futures value of that commodity is will be adding this storage cost plus what is the duration of the storage, then the interest cost of the amount you invested in the commodity and the contract value. So cost of carry is very important. You have to calculate when you are entering into the futures contract. You should know what is the cost of carry of the contract. Then delivery period in or staggered delivery. In NCDX, all the commodities are deliverable. So at the end of the contract, the buyers have to take the delivery and the sellers has to give the delivery. So this period is called staggered delivery, where intention is given. So if 20th is the date of expiry, then 5 days before the delivery period starts or staggering delivery period starts. In those periods, whoever want to deliver their goods, they have to give intention to the exchange, and the delivery happens. So all the buyers or the speculators who are not interested in taking or giving delivery have to square up the position before the delivery period starts. And next is the mark to market. In this is mark to market is a concept where exchange settle the account of the trade, where the position is carry forward. So for example, if any trade happens at 100 rupees, and then if it settles at the end of the day 120 rupees, then this 20 rupees will be his profit, and this profit will be delivered to his account. And if there is a loss, then we have to give the margin, that much margin we have to give. So M2M is only applied when the contract, when you carry forward your trade to the next day, and this happens every day. So if and the settlement price, what is today M2M, the next day the settlement price will be changed as on the previous day settlement price. The next is near month and far month contracts. So simultaneously there are so many contracts are going on in the live in exchange platform. So near month contract is the those contracts जो एकदम पहले, जैसे अभी 7th है, तो जो फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 20th को खत्म हो 20th को उसका expiry, then that is the near month contract, and far month will be the March 20th contract. So you should know which one is the near month and which one is the far month. Then basis. The basis is the difference. So arbitragers and hedgers, they use this basis prices to enter into the market. So it is a difference between the futures and the cash price of the commodity. So these we should make a track of this basis. It will change at every tick, every day when the future price changes and the cash price changes.
then there is a spread. So spread is difference between the prices of far month and near month. So it is नियर मैन एंड फार्मर कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं. एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज प्राइस कन्वर्जेंस वेयर the spot price and future price converse when the delivery month of the futures approaches. तो जो स्पॉट एंड डिलीवरी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस होता है उसका जो प्राइजेस है वो दोनों अगर अगर गैप है उसमें तो when the delivery period comes then those gap will fill because the real exchange of goods takes place due to law of supply and demand and arbitrage opportunities. The next is basics of supply. जो एग्री कमोडिटीज में जो ट्रेड जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, these all depend upon what is the supply and demand and what is the gap between the supply and demand. So we will see what are the things in supply and what are the things in demand. In supply, if you see in any for any agri commodities there is a balance sheet maintained by the traders where we see the what is the supply from the last year, what is the supply coming to into this year, and so on. So in the supply, the first consideration we should do is कैरी ओवर स्टॉक्स. तो लास्ट सीजन से अभी ये सीजन में जो सीजन स्टार्ट हुआ है उसमें वो कैरी ओवर स्टॉक्स कितना आ रहा है लास्ट सीजन में, तो दैट विल बी एड टू दिस सप्लाई टू दिस सीजन. सो उसके लिए जो पहला पॉइंट है या पहला ट्रेड जो पहला सप्लाई एंड डिमांड में जो वी सी द सप्लाई stock carry over stocks is the first figure. Then second is area and production estimate. As the season progresses the area kitna ho raha hai, production kitna estimated hai, this all comes through the government websites or local traders also do those surveys and they can find out कितना एरिया हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका एस्टिमेट निकालते हैं एंड देन दे ऐड इट टू कैरी ओवर स्टॉक्स. तो टोटल स्टॉक्स हमारे पास सीजन में कितना आने वाला है, दोज थिंग्स वी कैन कैलकुलेट. और उसके बाद जब सीजन जब शुरू रहता है उसमें सोइंग प्रोग्रेस होता है, फिर वेदर का कंडीशन है. अगर ड्यूरिंग द सोइंग सीजन अगर वेदर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बारिश नहीं हुई या ड्राई पीरियड हुआ, then the area production estimate will automatically come down and then the price fluctuation happens. So these things और फंडामेंटल में जाएंगे तो अगर ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो क्या है, what is the things सप्लाई को कौन कुछ डिस्ट्रक्शन है कि नहीं, ये सब. and then government regulations are also very important where supplies जैसे गवर्नमेंट टैरिफ ड्यूटी बढ़ाता है कम करता है. देन देयर इज इंपोर्ट पॉलिसीज, अगर इंपोर्ट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किया है या फिर गवर्नमेंट टाई अप विद अदर कंट्रीज तो फॉर सप्लाई, तो उस सिनेरियोज में सप्लाई ज़्यादा होती है देन द प्राइसेस विल मूव अकॉर्डिंगली. अगर डिमांड साइड में अगर देते हैं तो ये दोनों साइमल्टेनियसली वी ट्रैक एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट. सो डिमांड साइड में है तो वो करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस से भी डिमांड वी कैन गेज द डिमांड. इफ इट इज लास्ट ईयर का प्राइस एंड देन दिस ईयर प्राइस, इफ वी कंपेयर then we can easily know what is the demand right now. Then there will be a consumption forecast that also comes under demand. So and then price of alternatives, अगर कोई alternative है जैसे oil seeds में pulses में we have alternatives, अगर एक pulses का price बढ़ गया तो we switch over to other pulses, then the price will come down for the other pulses. तो oil seeds में भी हम लोग lots of edible oils are also there. So उस हिसाब से हम लोग देखें तो डिमांड ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द अल्टरनेटिव्स और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं. तो उस सब्स्टिट्यूट के कारण भी हम लोग डिमांड को गेज कर सकते हैं. देन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड के जो फिगर्स वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट, सो it is reflected in the balance sheet and we calculate those demands. Then government policies अगर है तो procurement
अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के साइड में अगर प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कर रहा है, देन द डिमांड विल बी मोर. सो गवर्नमेंट एमएसपी के रेट पे लेता है, जो जो कि फिजिकल प्राइस से ज़्यादा रहता है, तो वो डिमांड उधर बढ़ जाता है. एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर दे रहा है गवर्नमेंट, देन द डिमांड विल बी more for exports, like that. So this is the basics of demand supply in very short, and these are the point we have to uh, convert it into figures, and then we get the actual picture of what is the demand and supply. Then this is the last topic for last topic where we discuss about the classification of participants. So जो NCDX है या फिर फ्यूचर्स मार्केट है, तो उसको ड्राइव करने के लिए कौन कौन किस किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स वी हैव. सो फर्स्ट इज हेजर्स, देन आर्बिट्राजर्स एंड रिटेलर्स, एंड वी विल see how hedgers come to the exchange and how they participate in this. So in future market participant, hedgers normally, this is first point, hedgers normally do cash and carry because they have the physical backup, because they are really trading in the physical aspects of that commodity. Either he must be exporter, he is a processor of the commodity, he is a warehouse owner, or other processors units, and importers bhi hoga, so they also do cash and carry. Then other one is arbitrator, they do spreads. So we'll see examples of this cash of carry spread. And then third is retailers, they do direction based trading, they do intraday, or they do short term. In calendar spread there are two types of spread, two types of trade, do the bull spread and then bear spread. Brief about. So in cash and carry, if we see, this is a strategy where the spot or physical market, it's corresponding. In cash and carry, the arbitrage strategy that exploit the mispricing between the underlying assets. So इसमें क्या होता है कि जो spot price है commodity का और जो future price है commodity का, अगर वो दोनों में ज़्यादा difference है, और अगर trader difference, then there is the opportunity of cash and carry. This trade is usually executed by entering a long position. Long position means हम buy करके चलते हैं in physically buy करते हैं spot market से, and then simultaneously we sell the futures contract on the फ्यूचर्स मार्केट, एक्सचेंज में हम लोग उसको सेल कर देते हैं. तो ये जो ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन है, वो उस टाइम पे बनाया जाता है जब ये कॉस्ट ऑफ जो कैरी है, जो हम लोगों ने पहले देखा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैरी. कॉस्ट ऑफ कैरी अगर लेस है तो हम लोग द प्रॉफिट इज ओनली एश्योर्ड इफ द परचेज प्राइस ऑफ स्पॉट प्लस द कॉस्ट ऑफ कैरी इज लेस देन द प्राइस ऑफ फ्यूचर्स. तो अगर ये लेस है, दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे और फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने एंट्री किया है वो दोनों का जो प्राइसेस है ये कम है, देन ओनली दिस strategy is applied. So if we see the example, in the caster sheet, there is opportunity arises when difference between the futures and spot is greater than the cost of carry. अगर cost of carry, जैसे हम लोगों ने फिजिकल में दिस इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 5th February, अगर उसमें स्पॉट प्राइस अगर उसका 5,500 पर क्विंटल है, एंड फ्यूचर्स में उसका प्राइस 6,000 था, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500 रुपीज. एंड अगर प्रॉफिट अगर मार्जिन देखेंगे दोनों का, जो लॉट साइज के हिसाब से जो मार्जिन देखते हैं दैट इज 25,000. और जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो है स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस और अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अगर आ रहा है वन पर मंथ का 5,000 आ रहा है, तो अगर 3 months का भी हम लोग इसमें लेके चले तो भी we can be profitable when the contract expires. So here why this cost and cash and carry opportunity arises, because the difference between future and spot is greater than the total cost of carry.
सो इसमें हम लोग को दो सिनेरियो मिल सकते हैं। 5 फरवरी को जब हम लोग एंट्री करते हैं मार्केट में, और जो उसका अप्रैल में अगर हम लोग उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन, सो इफ द प्राइजेस 5 फरवरी को उसका प्राइजेस 5500 था, अगर वो 6500 अगर स्पॉट प्राइस में भी हो जाता है, so the difference, you can have a profit in the spot market, but in the future market you have a loss. But net में हम लोग जो जब पोजीशन था 25,000 का ही जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है माइनस। विल कॉस्ट ऑफ कैरी को हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। अगर प्राइस गिर भी गया तो भी वी हैव the we have a loss in the spot prices, but we can earn in the future prices. So but it is just an example. इसमें अगर बेसिस रिस्क भी होता है, जो एग्जैक्टली ये प्राइजेस दोनों सेम नहीं होते, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन इन द अगर हम देखें कि जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है इसमें। देन सेकेंड is spread trading. The spread trading में arbitragers looks करते हैं। So what is spread? How it is calculated? Spread is calculated when we subtract far month minus near month. So if we subtract this, तो या पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो इफ इट इज पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एडिशनल कॉस्ट एंड कैरी को ऐड करने के बाद ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है देन तो ये प्रीमियम पे ट्रेड करता है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ हाई डिमांड। जो कमोडिटी का डिमांड है वो नियर मंथ में ज़्यादा है, लेकिन जो फार मंथ है उसमें वो इतना डिमांड नहीं है। उसका डिमांड नहीं है क्योंकि उस टाइम पे अगर पीक अराइवल सीजन है तो उस टाइम पे वो प्राइसेस कम रहता है। सो इन स्प्रेड इट इज फार माइनस नियर, एंड देन वी सी how we trade in spread. Spread trading involves simultaneously buying and selling the contract of the same asset with different expiry date. So हमने देखा कि spread तभी हम लोग एंटर करते हैं जब हम लोग देखते हैं कि जो स्प्रेड में मिस प्राइसिंग है, ज़्यादा स्प्रेड है या कम स्प्रेड है, उसके ऊपर हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। जनरली स्प्रेड फॉलोज मीन रिवर्सल। सो इफ द स्प्रेड इज मोर देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्प्रेड कम होता है, अगर वो कम है तो द स्प्रेड विल then again it will increase. So we'll see one example. So a long spread कब करना है और short spread कब करना है? There are two types of spreads. When there is a positive, when spread is positive, that is far month is greater than near month, then we have to तो हम लोग को पॉजिटिव लॉन्ग स्प्रेड करना है। तो उसमें क्या करना है कि बाय नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोग फरवरी वाला मंथ बाय करेंगे एंड मार्च वाला मंथ सेल करेंगे। So and if it is short spread, when the spread is negative, then we do the short spread where we sell the near month and then buy the far month. So when to enter spreads. So with back testing बहुत सालों के डेटा के बाद हमने ये डेटास निकाले हैं कि अगर टर्मरिक का 2 फार मंथ एंड नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट इज 250 प्लस और 250 माइनस होता है तो वी कैन एंटर इनटू द स्प्रेड। पॉजिटिव स्प्रेड रहेगा तो वी डू ए लॉन्ग स्प्रेड, अगर नेगेटिव रहेगा -250 रहेगा तो वी डू ए शॉर्ट स्प्रेड। लाइकवाइज इन जीरा 400 to 4500 तक अगर उनका स्प्रेड है देन वी एंटर इनटू दिस स्प्रेड। कैस्टर में 50 रुपीज होगा, then we can enter 50 plus minus 50 plus 50 होगा तो we enter long spread, and minus 50 होगा तो we enter short spread. Then अगर हम लोग example देखें, this is example of a positive spread. How it is positive? Because अगस्त का प्राइस प्लस सितंबर का स्प्रेड, the spread is plus 35. So in कॉटन से आर्टिकल इट इज अराउंड 30 to 40 अगर रहेगा स्प्रेड तो वी एंटर। सो इट इज द स्प्रेड इज 35 ऑन जुलाई 27, देन इट इज अ पॉजिटिव स्प्रेड बिकॉज इट इज पॉजिटिव। सो ऑन जुलाई 27 द प्राइसेस, सो वी बाय द जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, बाय द अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल द सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाय 9th August the prices went
price has gone to 25.99, and then this. So the profit loss, we get the profit of 21 points in this trade. So this is a positive. And then for the negative spread, the date of this was date of trade was 21st November, where December contract price was around 29 and 29.68 and 29.33. The spread is 35. So we minus 35. So we enter a negative spread, and we see on 29th the spread, the profit loss comes to 19, and on 7 December, if they hold the position, then there is a possibility of 149 points profit and loss. So this is just an example, and from previous days. And then last is retailers. How retailers or speculative trading happens. Retailers enter into the futures trade. They don't have any physical exposure to the commodities. They trade directional base, और टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, नहीं तो प्राइस एक्शन यूज करते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ retail or speculative traders. They hold the trade for a day, that is called intraday trade, or they hold a trade for 2 or 3 days or a week, that is called short term trade. So for retailers, it is very risky, because they have to trade based on technical indicators or price action, whereas in arbitrage or in hedging, the risk is limited, because they have the hedge position. If they are uh, making money in one physical side, then they are getting loss in the future market. And if they have profit in future, then they are making loss in the spot market. So they are all hedged, and they're limited. The profit and losses are limited. But in retailer or speculative trading, the profit losses may be huge if trade is not gone into their favor. So by this end of the end of the PPT, and I want, if there are any queries, I will happy to address. सो एक क्वेश्चन आया कि ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे होता है. जैसे अगर बायर और सेलर, बायर्स को अलग रिस्क होता है, सेलर को अलग रिस्क होता है. सो दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तो बायर्स को रिस्क होता है कि प्राइस बढ़ ना जाए, और सेलर को रिस्क होता है कि प्राइस कम ना हो जाए. सो बायर्स do they lock in the prices early, before they want to procure any commodity, so that they are hedged. और सेलर जब ट्रेड करता है, सेलर सीजन के पहले इसमें ट्रेड करता है, सीजन से पहले. सो व्हेन द प्राइसेस आर मोर, सेलर फ्यूचर्स में आके पहले ही वो सेल कर देता है, क्योंकि जब सीजन का स्टार्ट होता है द प्राइसेस आर मोर. सो व्हेन द कमोडिटी कम्स इन द हार्वेस्टिंग सीजन, द प्राइस इज ऑलरेडी लॉक्ड फॉर हिम. सो तो बहुत ही इजी रहता है सेलर्स और हेजर्स को फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए. एंड क्वेश्चंस. टिक साइज के लिए क्वेश्चन है. टिक साइज, I think we have given a slide on tick size. You can refer to that slide. स्ट्रैगर डिलीवरी पे क्वेश्चन है.
स्टेगर डिलीवरी एक पीरियड होता है जिसमें बायर्स और सेलर्स को एक इंटेंशन देना पड़ता है कि वो डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. सो इन दैट पीरियड द मार्जिन, जो मार्जिन मनी होता है, जो मार्जिन अगर 13% है, तो स्टेगर डिलीवरी जैसे ही आता है, देन दिस मार्जिन मनी विल इंक्रीज एज द डिलीवरी पीरियड प्रोसीड्स. सो अगर 13% है तो देन अगर 14 को अगर 13% है तो 15 को अगर स्टेगर डिलीवरी स्टार्ट हुआ तो देन इट विल इंक्रीज बाय 2% और 1.5% एज वी गो इनटू द 20th एक्सपायरी. सो उस हिसाब से इसीलिए जैसे ही मार्जिन मनी बढ़ने लगता है, जो ट्रेडर्स, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन taking or giving the delivery, they square up the position and move over to the next contract. एग्री ट्रेडिंग, हाँ, कोटक में अवेलेबल है, बट इट इज ऑन द ओडिन एंड वी आर we are working to get it into the online version also. I think there are no more relevant questions I can see here. Thank you everybody for joining for this presentation, and hopefully you have get a good insight about the agri commodities and how to trade, and from the traders who are hedgers and arbitragers. And thank you all for joining in. Thank you very much.